Good morning students, I welcome you all. Today we are going to discuss the chapter 3rd, that is private, public and global enterprises in the revision form. Students, as your chapter is over now, so today we are going to start the revision students. So students, let's discuss private, public and global enterprises. Students, what do you mean by the term private sector? Students, private sector means a business which is owned, managed and controlled by individual or a group of individuals. Right students, एक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल मैनेज करता है और चलाता है स्टूडेंट्स. मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट. राइट स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अंडर chapter 2 that is forms of business organization that there are 5 types of private sector enterprises, that is sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, cooperative society, joint stock companies and multinational companies. Right students, these are all comes under private sector enterprises. I hope it is very much clear to you students. So let's discuss the next topic, and the name of the next topic is public sector. Now students, what do you mean by the term public sector? Public sector means public sectors are those organizations which are owned, managed and controlled by government. यहाँ पे बेटा government का मतलब होता है state government as well as central government. Right students, they may also be a part of ministry. Right students, or may be into existence by the special act of the parliament. By the special act of the parliament, you know it students very well कि कौन सा corporation आता है, public corporation आता है. Right students, these enterprises are established with the purpose of earning reasonable profit while serving the society. इनका मेन काम होता है students reasonable profit earn करना by serving the society. The form of organization which a public enterprise may take are, you know it very well now students. There are 3 forms of public sector enterprises. The very first is departmental undertaking, then statutory corporation and government companies. Right students, there are 3 types of public sector enterprises that comes under public sector. The very first is departmental undertaking, the other one is statutory corporation and the third one is government company. So let's discuss students one by one the public sector enterprises. The very first is departmental undertaking. Now what do you mean by the term departmental undertaking students? This is the oldest form of public sector enterprises. Right students, this is the oldest form of public sector enterprises or most traditional form of public sector enterprises. These undertakings are under full control of central or state government. Right students, for example, the best example is railways. Railways, postal telegraph, these are the best suited example of departmental undertaking. And the second important example is where strict secrecy are required. Right students, where strict secrecy are required, the departmental undertaking is the best form of organization. For example, defense. Right students, so let's discuss departmental undertaking. This is the oldest form of public sector enterprises. The departmental undertaking is considered as one of the departments of the government. It has no separate legal existence. मतलब government और departmental undertaking are treated at the same entity students. Right students, for example, railway, defense, postal telegraph, telephone services, these are the examples of departmental undertaking. Right students, I hope it is very much clear to you. For example, BSNL, it's a part of a departmental undertaking. So let's discuss the merits or features of a departmental undertaking students. Now students, these undertaking may be under the central or the state government. As I told you earlier, full control of the central and state government, and the rules of central government or state government are applicable. I hope it is very much clear to you students, and easy to form. It is very easy to form a department undertaking as no registration is compulsory. क्योंकि गवर्नमेंट इसको खुद ही चलाती है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से कोई रजिस्ट्रेशन का इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सेकंड, they are accountable to the ministry since their management is directly under the concerned ministry. जो भी जवाबदेही है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की वो मिनिस्ट्री से होगी स्टूडेंट्स. दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री. Right students, I hope it is very much clear to you. Now come to the third one, where national security is concerned. Right students, where national security is concerned, this form is most suitable since it is under the direct control and supervision of the concerned ministry. I hope it is students, it is very much clear to you. The departmental undertaking is under strict control and centralized. Right students, and
students, the staff of the departmental undertaking are civil servants and are recruited under the rules of civil servant, IAS, IPS, IFS, IRS, PCS, right students? So they are a part of government only. There is no separate entity. They are financed from the annual budget of the government. They operate under the overall control of one of the ministers of central or state government. I hope it is very much clear to you, students, right students? So there is proper utilization of funds as financial matters are subject to ministerial sanction, budget, accounting and audit control, right students? और जो भी ये इनके पास पैसा आता है स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे जमा हो जाता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी में, सरकारी खजाने में, right students? Come to the fourth one. The funding of these enterprises come directly from the government treasury. The revenue profit earned by these is also paid into the treasury, right students? So the activities performed of the departmental undertaking can be highly secret, as government can avoid disclosure of any matter to the public interest, right students? और public revenue आपको पता ही है, they are direct parliamentary control. The performance of departmental undertaking can be discussed in parliament. So there is a public accountability under parliament. The revenue of departmental undertaking is deposited in the treasury of the government, students. I hope it is very much clear to you, students. Now come to the limitations. There are certain limitations also. Come to the limitations of a departmental undertaking. कि department undertaking के students क्या limitation है? The very first is departmental undertaking fail to provide flexibility, right students? Because they are under the direct control of the ministers concerned. तो जो भी departmental undertaking के अंदर employees members काम कर रहे हैं, वो they fail in flexibility because each and every task has to be sanctioned by the parliament concerned, by the parliamentary ministry concerned, right students? So the department undertaking work under the strict parliamentary control. There is too much interference of the minister and top officials, right students? This reduces the flexibility and inefficiency in undertaking, right student? I hope it is very much clear to you. And with a lot of political interference, under this second point has been written, lot of political interference through ministry is there, right students? So come to the third one. The employees are not allowed to take independent decisions without the approval of the ministry. This leads to delay in decision making, right students? I hope it is very much clear to you. So students, the department undertaking have no power to utilize their revenue, right students, as they are deposited in the treasury. There is no incentive to maximize profit. There is no direct relationship between the efforts and rewards, because जितना भी पैसा कमाती है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में सरकारी खजाने में जमा हो जाता है स्टूडेंट्स. As they are subject to budgetary control of government, students, they are not allowed to use their own revenue freely, as they have to be deposited in the treasury. It has no independence or freedom for utilizing fund in its own way, right students? Of course, inefficient management. The departmental undertaking are managed by the government officials. These officials are overburdened with the paperwork. इसमें बेटा paperwork बहुत होता है. They spend maximum time to answer the queries from the parliament or ministry, right students? So there is a problem under departmental undertaking. And the fourth one is, students, departmental undertaking suffers from red tapeism in its day-to-day working. Red tapeism means bureaucracy. Red tapeism and bureaucracy is referred to delay in decision due to too many formalities. The decisions in the departmental undertaking are delayed due to administrative policies, formalities, paperwork, procedures, right students? So actions are taken only after following proper channels of authority. I hope it is very much clear to you, students. Departmental undertaking suffers from red tapeism and bureaucracy. Now suitability. Better departmental undertaking कहाँ पर suitable है? Departmental undertaking is suitable where strict secrecy are required. For example, defense, where huge investment is involved, that is aircraft, iron and steel. Right students, undertaking is a source of revenue, जहाँ से इनके पास पैसा आता है. For example, railway. I hope departmental undertaking is very much clear to you, students. Now come to the next one. The next one is statutory corporation. Statutory corporation और public corporation, students, क्या होता है? Statutory corporation and public corporation is the another form of public sector enterprises, right students? Statutory corporation has been formed by the special act of the parliament, like Life Insurance Corporation, LIC, Oil and Natural Gas Commission, ONGC, State Trading Corporation, STC. So these are public enterprises brought into existence by special act of the parliament. The act defined its power and function, rules and regulations governing its employees, and its relationship with government departments, right students? So
A, a statutory corporation is a body corporate formed by a special act of parliament or by the central or the state legislature. For example, Indian Airlines, Air India, State Bank of India, LIC, ONGC, SBI. Right, students? These are some of the examples of a statutory corporation. Now come to the features or merits of a statutory corporation. What are the features or merits of statutory corporation, students? The very first is the employee of these enterprises are not government or civil servants and are not governed by the government rules and regulations. Right, students? Under statutory corporation as it is been created by the special act of the parliament, तो कुछ प्राइवेटाइजेशन इसके अंदर होता है स्टूडेंट्स, एंड इसके अंदर जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो इंडिपेंडेंटली आते हैं और इंडिपेंडेंटली अप्लाई करते हैं जॉब के लिए. राइट स्टूडेंट्स, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. द सेकेंड वन इज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल, पार्लियामेंट्री एंड डिपार्टमेंटल इंटरफेरेंस. हालांकि ऐसा है नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इट इज पॉलिटिकली फ्री. सो a public corporation is able to manage its affairs with the independence and flexibility. A public corporation or statutory corporation is relatively free from red tapeism as there is less file work and less formalities as compared to departmental undertaking. Right, students? The activity of public corporation are discussed in parliament. This ensures protection of public interest. I hope it is very much clear to you. And the third one, students, now come to the third one. Profit motive is not the main consideration. Public accountability is also an important feature under statutory corporation. Right, students? So statutory corporation is formed for the interest of the public, students. Fourth one, the government does not interfere in their financial matters including their income and receipts. Their policies are subject to parliamentary control. Right, students? इसे पार्लियामेंट कंट्रोल करता है, तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती है. इसमें मिनिस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है स्टूडेंट्स. राइट, सो the public corporation have their own rules and regulations regarding remuneration and recruitment of employees. It can provide better facilities and attractive terms of services to staff to secure efficient working from its staff. Its board of directors consists of business experts and also the representative of various groups, right, students, which are nominated by the parliament. Now, students, under statutory corporation there is also a limitations. Now, let's come to लिमिटेशन ऑफ अ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन. बेटा रियलिटी में तो पब्लिक कॉर्पोरेशन है स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन भी, तो अगर पार्लियामेंट का कंसर्न है तो मिनिस्टर्स का भी कंसर्न होगा. पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से खोली जाती है तो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो मिनिस्टर्स अपने आप इन्वॉल्व होंगे, और जहाँ पर मिनिस्टर्स अपने आप इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो अपने आप आएगा ही आएगा. सो स्टूडेंट्स, अंडर इन रियलिटी अ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन डज नॉट एंजॉय मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. ऑल एक्शंस आर सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशंस. Right, students? So the autonomy and flexibility of public corporation is only for namesake. Practically, ministers, government officials and political parties often interfere with the working of these corporations. Right? I hope it is very much clear to you. So come to the second point. Government and political interference has always been there in major decisions or where huge funds are involved. जहाँ पर बेटा थोड़ा सा भी अगर स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन ने कुछ ह्यूज फंड जमा कर लिया, ह्यूज फंड एक्वायर कर लिया, ह्यूज फंड कमा लिया, तो गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अपने आप हो जाएगा. पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट फेस एनी कॉम्पिटिशन एंड आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, सो द एम्प्लॉयज डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस लॉस. राइट, स्टूडेंट्स? और स्टूडेंट, द थर्ड वन इज वेयर इट इन्वॉल्व डीलिंग विद पब्लिक, करप्शन इज इनवाइटेबल. जहां पर बेटा पब्लिक डीलिंग होगी तो वहां पर तो करप्शन अपने आप होगा ही होगा. सो the objects and power of public corporation are defined by the act and these can be amended only by amending the statute or the act. यानी कि जो भी एक्ट्स के साथ अमेंडमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, तभी चेंजेस इसके अंदर आते हैं. राइट स्टूडेंट्स? सो जनरली फोर्थ पॉइंट, अंडर द लिमिटेशन ऑफ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन जनरली एन एडवाइजर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इज अपॉइंटेड इन दीज एंटरप्राइजेस. राइट स्टूडेंट्स? एक एडवाइजर अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. हिज प्रेजेंस रिड्यूसेस द फ्रीडम ऑफ द एंटरप्राइज to enter into contracts or take independent decisions. Right, students? All these channels further delay in the actions. The government board of a public corporation may indulge into unfair practices. It may charge unduly high price to cover up inefficiency. I hope the student is very much clear to you. Now come to the suitability. Public corporation बेटा कहाँ पर suitable है? Where undertaking require monopoly powers, where undertaking requires special powers defined by the act, where undertaking require grants from the government students, right? Where the undertaking require appropriate combination of public accountability and operational autonomy. So there
public corporation or statutory corporation are more suitable. Right, students? So come to the next one. The next one, students, is government company. Now this is the third type of public corporation, government company. So students, according to the Indian Companies Act 1956 or as per the latest Indian Companies Act 2013, a government company is a company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the central government or state government or both. Right, students? और बाकी 49% of the capital has been transferred to the shareholders or in the public. So students, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 51% शेयर गवर्नमेंट अपने पास रखती है और 49% शेयर वो पब्लिक में बांट देती है. राइट स्टूडेंट्स? और जो भी 49% शेयर पब्लिक में बांटती है तो उसके वो शेयर्स इशू करती है, और शेयर जो इशू करती है गवर्नमेंट कंपनी वो विद द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से शेयर इशू करती है, जो कि एक आम जनता खरीद सकती है. राइट स्टूडेंट्स? सो अकॉर्डिंग टू द Companies Act 2013 or the Indian Companies Act 1956, it is an old act. न्यू एक्ट तो बेटा 2013 है, लेकिन डेफिनेशन दोनों में सेम ही है. गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट कंपनीज आर गवर्न्ड बाय द रूल्स और द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 ऑल्सो and the new Companies Act 2013. Right, students? For example, अब इसके examples क्या हैं students? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT. These are some of the examples of a government company. Right? So let's discuss the features of a government company. What are the features of a government company? The very first is a government company can be easily established under the Indian Companies Act 1956 or the new Indian Companies Act 2013. Right, students? A separate act in the parliament is not required. जिस तरीके से एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को एक स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के लिए रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के लिए नहीं होता है. So the government company gets incorporated under the Companies Act 1956 or the new Companies Act 2013. All the provision of the Companies Act आर अप्लीकेबल एज गवर्नमेंट कंपनीज. यानी कि जो भी अभी आपने कंपनी पढ़ी थी बेटा चैप्टर 2 के अंदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी आपने पब्लिक कंपनी पढ़ा था वो पब्लिक कंपनी के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं किसके अंदर? गवर्नमेंट कंपनी के अंदर. राइट स्टूडेंट्स? बीइंग अ सेपरेट एंटिटी, कम टू द सेकंड फीचर स्टूडेंट्स. Being a separate entity distinct from its member, it can sue and be sued by the third party. It is free from government regulations. जिस तरीके से आपने कंपनी में पढ़ा था, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. सिमिलरली स्टूडेंट्स उसी तरीके से बेटा गवर्नमेंट कंपनी की भी वर्किंग होती है. राइट स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट कंपनी केस लड़ सकती है, अपने ऊपर केस कर सकती है, थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है, और गवर्नमेंट कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है. इनके अंदर में काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके आने से जाने से गवर्नमेंट कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. राइट स्टूडेंट्स? ये कॉन्ट्रैक्ट लड़ में आ सकती है, अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, अपने नाम से शेयर्स इश्यू कर सकती है विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट स्टूडेंट्स? सो ऑल द फीचर्स ऑफ अ कंपनी एक्ट, Public Company Act has been followed under the government company. Now come to the third one, student. The company has the authority to sell and purchase its property and enter into contracts in its own name. I told you already, students. So it is very much clear. The government company is wholly or partially owned by the government. The share capital of these companies is owned by the government of India in the name of the president. Right, students? The companies, fourth point is अंदर students, the companies are able to control market and reduce unhealthy business practices by providing goods and services at reasonable prices. Right, students? So goods and services ये reasonable price पर government companies बेचती है. The government company has a separate legal existence. It can buy and sell property in its own name. A government company subject to ministerial control. The concerned ministry makes appointments of directors. The ministry may issue directions and assume the overall supervisory of the undertaking. As students, the government company enjoy borrowing powers. It can raise capital by issue of various securities. Right, students? और इनके पास जो भी पैसा आता है, it is free to use its revenue for the growth and expansion of the company. Now it is very much important, students. It is free to use its revenue for the growth and expansion of the company. I hope it is very much clear to you. Now come to the fifth
पॉइंट स्टूडेंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स यानी कि टू चेक द अकाउंट्स इज कंडक्टेड बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चेक किए जाते हैं। वहां पर उनके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट चेक करते हैं और इनकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट में दी जाती है और पार्लियामेंट में पहुंचाई जाती है और पार्लियामेंट में डिस्कस करी जाती है। राइट स्टूडेंट्स, सो द गवर्नमेंट कंपनी आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंटल कंसर्न। इट्स एनुअल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। एंड स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स इट इज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन, तो पार्लियामेंट का तो दखल अंदाजी इसमें होगी स्टूडेंट्स, और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर्स के भी इसमें इंटरफेरेंस रहेगा ही। सो कम टू द लिमिटेशंस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी स्टूडेंट्स, दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। In some of the companies, the provision of the Companies Act do not have much relevance because the government is the only shareholders. Right student, ऐसी कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं जिनमें जो मेजर शेयर होल्डिंग्स होती हैं वो गवर्नमेंट के पास ही होती है और गवर्नमेंट का अपना इंटरफेरेंस रहता है स्टूडेंट्स। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। और बेटा, द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड टू गवर्नमेंट कंपनीज ट्रू थियोरेटिकल ओनली। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द गवर्नमेंट बीइंग द मेजर शेयर होल्डर, राइट स्टूडेंट्स, तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो गवर्नमेंट कंपनी है वो अपने हिसाब से ही चलाती है। कम टू द सेकंड लिमिटेशन स्टूडेंट्स, बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी द होल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। दस द वेरी पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग इट अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और अंडर द न्यू कंपनीज एक्ट 2013 गेट्स समवॉट डिफीटेड। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है और होल एडमिनिस्ट्रेशन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो जो पर्पस है रजिस्ट्रेशन करवाने का कंपनी के एक्ट में, और आपको पता है कंपनी का एक्ट कौन सा है, अंडर 1956 और अंडर स्टूडेंट्स 2013, वो समवॉट डिफीटेड हो जाता है। द गवर्नमेंट कंपनी आर ट्रीटेड एज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्टर्स। द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स इज फ्रीक्वेंट। राइट स्टूडेंट्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, सो दीज डायरेक्टर्स ऑलवेज ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट rather than improving the efficiency of the government company. I hope it is very much clear to you students. And the suitability कि government company कहाँ पे suitable है, where the projects require government planning and funds, where the government wants to go for the collaboration with private enterprises, right, where the government want to control a company in the private sector without nationalization. Right students, government company वहाँ पे successful है जब privatization करना हो या प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन करना हो या प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करनी हो। राइट स्टूडेंट्स, तो गवर्नमेंट कंपनी सुटेबल है। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन, राइट स्टूडेंट्स, कम टू द डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सो लेट डिस्कस द डिफरेंस स्टूडेंट्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फर्स्ट फॉर्मेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री, राइट स्टूडेंट्स, without private participation. Statutory corporation by the special act of the parliament. Government company under the Companies Act 2013 or the Companies Act 1956. Legal status, no separate entity. Department undertaking में government और department undertaking they are treated as the one and the same entity. Statutory corporation में separate legal entity होता है, वहाँ पे government और statutory corporation they are separate और government company भी they are separate. Of course जो भी कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ओनरशिप, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर पब्लिक कॉर्पोरेशन स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स इट इज अ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। जबकि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर स्टूडेंट्स 51% शेयर्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज नॉट 50, इट इज स्टूडेंट्स 51% शेयर्स आर होल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बाकी 49% शेयर आर होल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। राइट स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर मतलब पब्लिक। Now come to the next one. The next one, students, finance. Departmental undertaking. It is finance out the government treasury. जो भी पैसा होता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हो जाता है। Now under public corporation, it is financed independently either by borrowings from the government or through the revenue. Right, students? Or government company, it is obtained its fund from the government and private shareholdings. Private shareholdings मतलब जो 49% शेयर जो पब्लिक के पास है। Management and control, students. It is managed and controlled by the government officials. कौन सा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग? फुली इट इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एंड सेम कंडीशन स्टूडेंट्स अंडर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर भी स्टूडेंट्स पार्लियामेंट ही अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो इट इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट कंसर्न। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी अंडर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। Students, the public accountability. These enterprises are fully accountable to the public. Right, students, and ministry concerned.
कौन सा बेटा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. जबकि पब्लिक कॉर्पोरेशन दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. Right, students, or government company, they are accountable to the ministry concerned. I hope it is very much clear to you, students. Now come to the next topic. The next topic is multinational company. Okay, now students, the next topic is global enterprises or MNCs or multinational corporation. इसको हम ट्रांसनेशनल एंटरप्राइजेस भी कहते हैं. बेटा एक कंपनी जिसका बिजनेस डिफरेंट कंट्रीज में हो, दैट इज नोन एज ग्लोबल एंटरप्राइजेस और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. यानी कि अ कंपनी विच ऑपरेट्स इट्स बिजनेस in more than one country, that is known as multinational company, global enterprises, transnational enterprises. Right, students? For example, Coke, Samsung, Aiwa, Sony, ये सारे के सारे बेटा, Reebok, Reed and Taylor, ये सारे के सारे बेटा multinational companies हैं. Let's take an example of a Coke. Coke बेटा it's a American company. Right, students? So headquarter और home country America हो गया. लेकिन 80 countries है, more than 80 countries में Coke का business है. मोर देन 80 कंट्रीज, जो बाकी की 80 कंट्रीज में जहां पर कोक पी जाती है, जहां पे कोक का बिजनेस है, दे आर नोन एज ब्रांचेस. स्टूडेंट्स, दोज कंट्रीज आर नोन एज ब्रांचेस कंट्रीज. और बेटा उसको बोलते हैं MOFA, मेजोरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स. स्टूडेंट्स, देयर ब्रांचेस आर आल्सो कॉल्ड MOFA, मेजोरिटी ओन्ड फाइनेंशियल फॉरेन एफिलिएट्स. Students, it is very much clear to you. So let's discuss the multinational company. Students, what do you mean by the term multinational corporation? हम इसे किसे कहते हैं students? So let's discuss this. So students, multinational corporation, multi means a company which operates in many countries. Such a company has branches, foreign workshops in different countries. Right, students? So a multinational company may be defined as a company that operates in several countries. Such a company has factories, branches or offices in more than one country. Their branches are also called majority-owned foreign affiliates. MNC is also known as transnational company, global enterprises or international enterprises. I hope it is very much clear to you as I give you the example of a Coke also. Now come to the next one, students, the features of a multinational corporation. Right, students, what are the features of a multinational corporation? Huge capital resources. The most important characteristics of these enterprises that they have got huge financial resources and also having the ability to raise funds from different sources. बेटा सबसे बड़ा बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनी होता है. राइट स्टूडेंट्स, लैक्स में करोड़ में इनका टर्नओवर होता है, लैक्स में करोड़ में इनका अपना बिजनेस होता है. स्टूडेंट्स, जाइंट साइज में इनके एसेट्स होते हैं, जाइंट साइज में बिजनेस करते हैं स्टूडेंट्स. सो द एसेट्स एंड सेल ऑफ अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आर क्वाइट लार्ज. दीज कंपनीज ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल. For example, the physical assets of IBM, that is International Business Machine, exceeds $8 billion. Right, students? So the most important characteristics of these enterprises is that they have huge financial resources and also having the ability to raise funds from different sources. That is by issuing equity shares, debenture or bonds to public, or by borrowing funds from financial institutions and international banks. Right, students? Come to the next one, advanced technology. Of course, they have got the advanced technology, students. These enterprises use advanced technology for production. Hence, goods services provided by the MNCs confirmed to international standards and quality specifications. Also, these enterprises ensure optimal utilization of resources and raw materials in the host country. इनको बेटा रॉ मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टेक्नोलॉजी की इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मनी, मशीन्स, मैन पावर की इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. इनके पास होस्ट कंट्री के से ये कोलैबोरेट करती है ब्रांचेस कंट्रीज, और वहां पर होस्ट कंट्री के अंदर ही जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बनाए जाते हैं. राइट स्टूडेंट्स, सो एडवांस टेक्नोलॉजी इज देयर. राइट, multinational companies make use of latest technology to supply world-class products. Right, students, or they employ capital-intensive technology. Capital मतलब machine-based technology, sophisticated, highly sophisticated machine-based technology और techniques of production ये use करते हैं. Now come to the another one, students. Product innovation. New and improved products हमेशा MNC सबसे पहले बनाती है. These enterprises have efficient team doing research and development. इनके अपने research and development centers होते हैं जो कि हमेशा लगे रहते हैं अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से improve करें और न्यू बनाएं. The main task is to develop new products and design the existing product or developing the quality of the existing products, new shape in such a manner as makes them look new and attractive, and also to create and satisfy the demand of the customers. I hope it is very much clear to you, students. Marketing strategies. स्टूडेंट्स, दे स्पेंड लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स. इनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत खर्चा करते हैं. बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को, स्पोर्ट्समैन को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ये अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं. कौन? मल्टीनेशनल कंपनीज. द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड बाय MNC आर वेरी इफेक्टिव एज कंपेयर टू अदर एंटरप्राइजेस.
These enterprises have well developed and latest marketing information system. They use latest techniques of advertising and sales promotion, discount, coupon, samples, brand ambassadors for increasing their sales in short period. Right, students? I hope it is very much clear to you. So come to the next one, centralized control. राइट स्टूडेंट्स, जो होस्ट कंट्री होती है, जहां पर हेड ऑफिस होता है, जो हेडक्वार्टर होता है, वहां से प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं. डिस्पाइट द फैक्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ दिस एंटरप्राइज आर स्प्रेड ओवर इन मेनी कंट्रीज, they are managed and controlled by their head office in their home country only. All these branches have to work within the broad policy framework of the parent company, मतलब जहां पर headquarters होते हैं students. The next one is expansion of market territory. As network of operations of these enterprises extended beyond their existing physical boundaries, इनके पास स्टूडेंट्स ये कहीं भी जाके बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाके बिजनेस कर सकते हैं, बस इनको परमिशन मिलनी चाहिए. दे आर रेडी टू गिव द टैक्स, दे आर रेडी टू गिव द फॉरेन करेंसी ऑल्सो. तो ये बिकॉज दे इनका प्रॉफिट बहुत जबरदस्त होता है, बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं, और वहां पर जाकर स्टूडेंट्स इनको एक्सपर्टाइज भी बहुत मिल जाती है. सो दे एक्सपेंड देयर मार्केट टेरिटरी. They operate through their branches, subsidiaries in host countries and occupy dominant position in various markets. I hope students it is very much clear to you. So, और दूसरी वाली बात students, due to their giant size, the multinational company occupy a dominant position in the market. Right, students? They also take over other firms to acquire huge power. For example, Hindustan Unilever Limited acquired Tata Oils Mills Limited, Ponds India Limited to improve their market share. Right, students, I hope this is very much clear to you, students. So let's discuss the next topic, students, in the next video. So learn from this video, and if you find any difficulty, you can ask me, students. Thank you, students.